आज आप एक डोमेन मुझे बता दीजिए जहां लॉ की जरूरत नहीं है. It's a prerequisite. It's a minimum. Yeah. And I guess I should have been introduced right in my first years. So आप टीचर्स रिक्रूट जब करेंगे जो इन बच्चों को पढ़ाएंगे, so what do you see? कि एक टीचर अब सिर्फ पढ़ाता है वाला टीचर नहीं बचा है. अंतर क्या है और हम क्या देखते हैं. तो बेसिक रिक्वायरमेंट एक चीज़ होती है. Why did you choose this specialization? Because उस समय वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी कि ये चीज़ है. So hello everyone, welcome to this new video. आज के वीडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर देवांशु सर. अपार्ट फ्रॉम बीइंग फैंटास्टिक अकेडमिशियन, और मैं वापस से वर्ड फैंटास्टिक बोल रहा हूँ. इफ यू वांट टू चेक हिज प्रोफाइल और वांट टू कांटेक्ट विद हिम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का लिंक्डइन मिल जाएगा. सो इस पॉडकास्ट के अंदर सर से हम बात करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस किसी भी लॉ स्कूल को रन करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू आर समवन जिसको लीगल अकेडमिया में अपना करियर बनाना है, तो ये पॉडकास्ट और टिप्स सर की आप ध्यान से सुन लीजिएगा. जहां तक बात करें सर की प्रोफाइल की, सो आई विल ट्राई टू सम अप इन अ ब्रीफ. सो लेट्स स्टार्ट. सर अभी के टाइम पे फाउंडिंग डीन एंड प्रोफेसर हैं एट जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट. प्रायर टू दिस सर वाज द एसोसिएट डीन एट जीडी गोयनका इंस्टीट्यूट. उससे पहले सर वाज द एचओडी एट जागरण लेक यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक मानी जाती है. So on that note, let's start this podcast. Okay, तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा, when it comes to the law school administration, so एक law school को सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ पे आता है रन करने के कॉन्टेक्स्ट में, कि अच्छा भाई प्लेसमेंट अच्छे इंश्योर करने हैं, फैकल्टीज़ अच्छी हायर करनी है जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक लॉ स्कूल ध्यान में रखता है व्हेन इट कम्स टू द लीगल डोमेन और लीगल एजुकेशन पर से. सो देखो, लीगल एजुकेशन एंड व्हेन आई स्टार्ट अ लीगल इंस्टीट्यूशन, इट बेसिकली गोज इन 3 phases. सबसे पहला, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूट एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ईयर्स हैं, सेकेंड ईयर्स हैं, और ये 5 year लॉ कोर्स है, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 year लॉ कोर्स, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स में प्लेसमेंट नहीं देखते. हम ये देखते हैं दैट द बेस ऑफ द स्टूडेंट शुड गो स्ट्रॉन्ग. और एक लॉ स्टूडेंट के बेस के लिए, बिकॉज ये बच्चे हैं जनरली 12th के बाद, अभी तक इंडिया में यू आर नॉट फाइंडिंग स्कूल्स जो कि बेस इन द क्लास 12th लीगल एजुकेशन से लेके चले. सो द लीगल एजुकेशन इज बेसिकली जो हम हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हैं, तो ये एकदम फ्रेश लॉ एंट्रेंस है. आई विल नॉट यूज अ वर्ड दैट दे आर लीगल, इनका बैकग्राउंड है कुछ, ये आते हैं कि इनको लॉ करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो थोड़ी रीजनिंग और बाकी चीज़ सीख कर आते हैं. तो लॉ स्कूल का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इज द गुड बेस, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्ट ऑफ कि उनको बेस चाहिए. देन यू रिक्वायर फॉर दैट एट फर्स्ट स्टेज, यू रिक्वायर teachers who can establish the students with their good base, ki what is law, how law is being taken up to, what all things are there. A mandated book which I have generally prescribed at all the law schools is Learning the Law. This is one book which I was introduced when I was in my 4th years, and I guess I should have been introduced right in my first years. One book that has cleared all my basics, that what and how a law school should go on to. Second is there should be a good reading. So when I talk about good reading, I do not talk about materials to be given by teachers to students, but spending time in library. Nowadays, library is both hard volume books and the e-libraries which is there. So a law student should also be taught how to study a case law. So this is how what strengthens the first part of the law school, कि केवल बेस एक अच्छा होना ज़रूरी क्यों है. Because if you're not understanding things, you'll not be able to take it up. Then comes the mid phase, which is generally a time of 3rd years and 4th years, where events like moot courts holds an importance. Exposure to legal aid camps, exposures of how the student is overall, the internships do comes into play. And the institution, the legal institution should not only work on this base, but when it comes to, they should incorporate internships as a part of their curriculum. अपने सिलेबस का समर इंटर्नशिप पार्ट बना लीजिए, जिससे कि और डिवाइड कर दीजिए बच्चों को वहीं पे, कि इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग, या मेरे साथ मेरे दोस्त सारे चले जा रहे हैं लिटिगेशन में. आप डेवलप करिए कौन लिटिगेशन वाले बच्चे हैं. यू कैन यूज साइकोमेट्रिक टेस्ट टू डेवलप दिस पर्टिकुलर हैबिट एट योर इंस्टीट्यूशन. कौन लीगल इंटर्नशिप्स लिटिगेशन वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे जुडिशरी वाले. अ जुडिशरी एस्पिरेंट इन योर 3rd years and 4th years वुड नेवर लाइक टू डू एन इंटर्नशिप विद अ लॉ फर्म. True. So वहाँ पर क्या हम apprenticeship or clerkships with the judges and the courts, and that's a good thing which is opening up in our country. You get to see what side of it, and that would help a judicial aspirant.
And then comes the final years. That's my third and last phase, जहाँ placements, जहाँ पर again competitive exams and how these people are working and how they should be taught. So ये एक 3 phase का एक gradual process है, which as an institution builder, as an institution myself, we need to see कि आप हर वो चीज़ एक 12th पास बच्चा स्टार्टिंग 2 years में कैसे बिहेव करेगा, 3rd और 4th year में वो कैसे नर्चर कर रहा है अपने आप को बिकॉज ऑफ गुड बेस, एंड फाइनल ईयर्स में पहुंच के वो प्लेसमेंट्स या बाकी चीज़ों के लिए वो देख। राइट सर, आपने बात करी कि लॉ स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चैलेंज आते हैं ना। फ्रॉम अ फैकल्टी पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू आस्क, सो आप टीचर्स रिक्रूट जब करेंगे जो इन बच्चों को पढ़ाएंगे, सो व्हाट डू यू सी कि अच्छा यार इसने LLM या PhD XYZ इंस्टीट्यूट से करी है, इंडिया से करी है, ओवरसीज से करी है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस कैसे होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस हु हैपन्स टू बी अ लॉयर अभी हैं या बनने वाले हैं, दे ऑप्ट फॉर अकेडमिया। तो उनको दिमाग में क्या रहना चाहिए जिससे उनकी रिक्रूटमेंट के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए? ओके, सो पार्थ, आई वुड से द गुड थिंग दैट यू हैव आस्क्ड मी दिस, बिकॉज सबसे बड़ी एक चीज़ आ जाती है कि एकेडमिक्स करना है तो LLM होना चाहिए, नेट होना चाहिए, और PhD में या तो एनरोल्ड हो या PhD होना चाहिए, और अगर जो PhD हैं वो नेट नहीं होंगे तो भी चलेंगे। दिस इज अ बेसिक फ्रेमवर्क। करेक्ट। आई जस्ट वुड लाइक टू गो थोड़ा सा पीछे, ये ज़रूरत क्यों पड़ा? आई नो देयर इज़ अ बिग डिबेट इन आवर कंट्री कि एक एग्जाम कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं हूँ। नाउ वी शुड नॉट सी इट विद दिस एंगल. The purpose behind this and the purpose of the motive behind putting one particular exam, that there should be some threshold. This is at no point being made कि किसी को हम टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा आप नेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप बड़े अच्छे टीचर हैं। दोनों होता है, एंड ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सिर्फ मियरली मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट है दैट डजंट मेक्स मी अ गुड टीचर, और ऑपोजिट ऑल्सो कि मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है इसका मतलब मैं अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता, नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या, LLM क्या होता है? LLM देखिए, LLM इज बेस डिग्री इन लॉ प्लस अ स्पेशलाइजेशन इन वन पर्टिकुलर डोमेन ऑफ लॉ। सिमिलरली दैट इज कैरीड आउट जनरली इन आवर कंट्री कि LLM हमारा इससे है। मैं अपने एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं शुरू से एक IPR एंथुजियास्ट या IPR स्कॉलर या IPR स्टूडेंट था, ठीक है, और मैं आज भी IPR स्टूडेंट ही हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं ओवरऑल मेरे को हो गया, बट इट्स मोर देन 20 years फॉर मी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ IPR, एंड आई वांट टू बी फर्दर मोर 20 years टू बी अ स्टूडेंट ऑफ IPR। तो IPR मेरा ग्रेजुएशन में था। पोस्ट ग्रेजुएशन LLM स्पेशलाइजेशन इज बिजनेस लॉज एंड IPR। माई PhD टॉपिक इज इन IPR। माई पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप इज इन IPR, एंड आई लव टू टीच IPR। Why? Now somebody asked me, IPR is a big domain, copyright है, patent है, trademark है, ये मेरे से इंटरव्यूज में पूछा जाता है। Now when you are there facing an interview, and I'm telling you as a aspirant of a teacher, as you ask कि अंतर क्या है और हम क्या देखते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट एक चीज़ होती है। उसके बाद nowadays good institutions, and I'll say I've been the part of that as well, and I'm a good advocate also for that, कि इंटरव्यू जनरली हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला, जहाँ पर बेसिक एप्लीकेशन हो गया, एक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई ऑन योर सब्जेक्ट, एंड व्हाट आई हैव जनरली फॉलोड, हम एक ओपन छोड़ देते हैं, आपको एक लेक्चर प्रिपेयर करना या आपको एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना जो आपकी चॉइस का। अच्छा, ठीक है, सो यू माइट बी गुड इन कॉन्ट्रैक्ट, आई माइट बी गुड इन IPR और समबडी एल्स, आप उसमें एक टॉपिक लेकर आ जाइए। तो दैट्स माई फर्स्ट स्टेज ऑफ माई इंटरव्यू। सेकेंड स्टेज ऑफ इंटरव्यू, आई वुड अलाउ यू टू गिव अ डेमो लेक्चर in front of my students. Now, many a times I might be good at interview, but when it comes to classroom teaching, I might fumble, I might come across with other difficulties. And that is where a demo lecture on a topic of your own choice in front of students, you get to know what is there. Nowadays, it's also about the technology. So it's no more the chalk and the board system. You'll have to be prepared with because good institutions have LMSs, which is like everything has to be in with technology. Major of the exams, all attendance, everything are being conducted on such of these softwares, and that is how the things are. Each lecture's PPT shall be uploaded first, so that the students can, it's not that the time of learning is 10 to 5 only. A student, for example, there are major of night birds nowadays, कि हमको रात में पढ़ेंगे, right. And that is also a good thing. There are very less early risers which I am facing with my students nowadays, but more of night ones. And when they say sir हमें तो रात में 11 बजे पढ़ना है, आपकी PPT मैं तभी एक्सरसाइज करूँगा. So that PPT should not be, again, there is an art in making PPT.
And this is something which is expected by a teacher. So that is where the second stage of demo lectures come into play on a topic of your own choice. And third is how well you are. So now a teacher is no more only a teacher. I was discussing with you कि एक टीचर अब सिर्फ पढ़ाता है वाला टीचर नहीं बचा है. चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे नेशनल सेटअप्स हों, a teacher also needs to be an administrator. And I'll tell you why an administrator, because स्पेसिफाइड LLM की स्पेशलाइजेशन है. हम हो सकता हो ADR सेंटर स्टैब्लिश करें, IPR सेंटर स्टैब्लिश करें, हम कॉम्पिटिशन लॉ का सेंटर स्टैब्लिश करें. वो सेंटर के अंदर हमें एक्टिविटीज़ करनी है, विच इज़ कंडक्शन ऑफ series of lectures, conduction of seminars, workshops, conferences, or even for that matter a seminar course. Now all these things is also required. Now today nobody can just say okay, I'm a teacher, I'll teach, I'll go back. So it is a multifaceted role what is expected from a teacher, and this is where the third stage comes into that. How well, like there are a number of accreditation agencies, so you need to collate data. You can be one center in charge. So that is how, for example, NAAC is there. अब NAAC अपना क्राइटेरिया 7 डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिवाइड करता है. रिसर्च एक है, इवेंट्स एक हैं, ये एक हैं. So as faculties we need to contribute. So we'll have to attend the conferences. हमें ये भी है कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपने कितने सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हैं, आपने कितने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे हैं, कितनी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करे हैं, कितना ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स कोलैबोरेट एंड ब्रिंग अ टीचर आउट. राइट. सो वन डिग्री, yes, I would say NET or PhD, which is a government mandate, should be followed. And once that is followed, आप उसको कितना, ये आप आज भी रखिए, आप नेट जब पढ़िएगा लिखा हुआ है मिनिमम क्राइटेरिया इज दिस. Nobody says that's a maximum criteria. It's a prerequisite. It's a minimum. Yeah. उसके ऊपर जितना आप कैपिटलाइज करोगे, आप नंबर 1 आप अपने ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और उतने अच्छे से आप उस चीज को आगे लेके जाओ. So that is what I personally feel to take. करेक्ट सर. इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि सिंस आपके नोन में इतने सारे प्रोफेसर्स हैं, आपने लॉ स्कूल एक्चुअल में चलाए हैं, डू यू सी एनी स्टार्क डिफरेंस फ्रॉम द पीपल जिन्होंने अपनी LLM NLU से करी है या फिर नहीं करी है? बिकॉज ये क्वेश्चन रहता है हमेशा NLU वर्सेस नॉन NLU का. मेरा बस यहाँ पे पूछने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो बच्चे अपनी मास्टर्स LLM NLU से प्लान कर रहे हैं, क्या उनको प्रेफरेंस या एज मिलती है इन अकेडमिया? Okay, so Parth, I would just answer, and I'm so thankful that you have only limited this question towards the national stage. आपने ये नहीं पूछा कि सर मास्टर्स अगर हम फॉरेन से करके आएंगे और क्या फिर एक वो एडवांटेज होता है. I'll tell you, देखो, it's not about the institution. Right. It's about the person who is coming on to. And I'll tell you, as I told as an answer to the previous question itself, कि 3 stage of interview. अगर मुझे सिर्फ institution के नाम पे admission लेना होता, so I wouldn't have conducted the 3 stages. Right, correct. I'll tell you very honestly and without any offense to anyone, with all respect to each one of them out there, I have seen people from state universities doing wonders. I have seen people from top national universities doing wonders. I have seen people from foreign universities coming back and doing wonders. But I have also seen people from all these institutions not doing good. Right. So, and forget about that. When I was there, couple of gold medals in my CV. When it was taken as and was like, okay, you are a gold medalist, so we should hire you. And the question is that only. Is that does that one medal? That one medal is only awarded me because out of the lot in my university, I was one of the best. But that doesn't. And how many institutions are there in the country? Into thousands. So there are 1,000 other best people who I have to compete. So that medal was a reward of what I did in my institution. At no point an institution name or a gold medal or a country specific name. Yes, it does. Like you also know, foreign LLMs nowadays, it's very costly. So true. Some of the bright talents in our country, they are able to clear the exams, but just because of the fees thing, they are unable to go. They are demanding for scholarships, and which are legitimate scholarships. They are unable to pursue that particular sort of dream. Does that mean that their career has ended there? No. So my only thing, and what I personally have been an advocate of, it's not the institution that would define you, it's the content inside you that would define, which is, and personally I have never seen whether it's a national university grad or postgraduate, whether it's a foreign university, it is
But yes, what content was there in your dissertation when you were presenting in your masters? Right. Why did you choose this specialization? And I'll just add to this. There is also one question which you might not have asked me, but is a very subsidiary question to this. Ki, sir, somebody has taken one specialization in masters and the PhD topic is something out of different. Right. I'll tell you one very important fact here, and a secret rather. Whenever we do PhD, I have not done PhD in IPR. I have done PhD in law. There have been questions in the simul कि सर आपके अंडर में PhD अवार्ड हुई है, आप तो IPR की फैकल्टी हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की PhD कैसे गाइड कर दी? Always understand, and this is my request to everyone, this showcases your domain. आप PhD लॉ में कर रहे हो, आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हो. आप चेक कर लो किसी की डिग्री इंडिया वाइड. In legal domain, if you have done a PhD, your PhD degree would be called PhD in law. Right. And then comes your topic. Now, as a guide, I can guide a student in law. Understand? Correct. It's irrespective which particular, and I'm guiding, I'm a supervisor. The ultimate thing is earned by the candidate itself. और वो research scholar, PhD is about how well have you researched about a particular topic. And that is the only thing. The content, even at your PhD, your dissertation, or your other things, will define you more rather than the institution name per se. करेक्ट, बिकॉज ट्रेंड तो ये रहता है कि अच्छा LLM की जो मेरी डिसर्टेशन होगी उसको मैं PhD से कन्वर्ट करा दूंगा. हाँ, ये चीज ट्रेंड है. ऑल्सो फॉर दैट मैटर जरूरी नहीं है कि आप, और मैं बताऊं आपको, आप अपनी थीसिस जो है आपने LLM करा है या आप करोगे, या आप कभी गौर करना उस पर क्यों ये लिखा होता है, दिस इज सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिग्री समथिंग, एंड दिस इज जस्ट एन ओपन कॉमन सेंस थिंग. जो चीज आपने कहीं और सबमिट कर दी, आप उसको कैसे, यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर यू आर सबमिटिंग इट. करेक्ट. एंड विदाउट दैट थिंग यू कैन नॉट पब्लिश अ बुक और समथिंग ऑन दैट बुक. करेक्ट. तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अ लेबल ऑफ अ प्लेस doesn't defines you to be that. You yourself and your knowledge would define it. No, nothing else for that matter. I still can cite my examples. We had a wonderful batch of students, and some of the very backbenchers, without taking their names, will kill me for this, but they were the backbenchers. They were like, we'll do it. And fortunately, when I came to know they are AOR in Supreme Court, they have cleared that exam, and they were not only cleared, they were in top 3. And their practice nowadays is wonderfully well. So this is exactly a question which, if I'll put it in litigation way, somebody has been appointed a standing counsel of a state. So does that mean that that person is much better than the others who are not? No. The simple answer to this, it's not about the institution. It's many a times it's also about how well I was taking that particular thing ahead. So the content inside you is much more important, and that's why generally we have interview phases at all the recruitment points. Correct. So that is the only subject. Yeah. So last question for the podcast. Nowadays I have seen a trend. There are multiple law schools that are coming in the country, which is a very good thing. However, जो private institutes हैं उनकी fees बहुत ज़्यादा है. So how do you see this thing in longer run? Either it's going to create a stark difference in the law school. आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि कंट्री में नए नए प्राइवेट लॉ स्कूल्स और बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे? Okay, so I'll tell you, and छोटा सा एक, let's take a recap. Why these private institutions rose specifically in legal domain? I'm talking, not going outside my domain. Yeah. So there was a time where state universities were on a very lighter side, being the fees. And why they were less? Let's take why the fees at the state university is always lesser. Because the funds are being given by the state government. Yeah. Number one. Private universities, on that matter, they are not being funded by any institution, not partly even, they are not being funded. So it's the money thing, and how they are doing, they are called as self-finance. Right. That is, whatever the fees is being generated by the admissions, they are taking it. Today, and this I'll put you ahead with. So today we go, and let's imagine we are going to buy a car. We have A car with basic amenities and a B car with all the facilities. And we say, no, we want to get a car with all the facilities. We should not see it that they are a money minting business. No, certainly not. Because if you have to provide amenities, it would require an investment. True. You'll have to hire good faculties.
So private universities came as a bridge between the state universities and the national universities. And believe me, gone are those days where the national universities fees is now at par with the private Absolutely, universities. yeah. So when we say ki why national university, they are, and believe me, national university and the concept behind, all praise and all I would say respect and regard to the man who laid that thing, late Professor Dr. N.R. Madhav Menon sir. Now in 88, when you create this idea of establishing a national university in Bangalore, and on that thing, how, look at the vision, look at the mission, and look at the way that it has led forward to. So institutions with a mindset, now these are dedicated, these are just like what IITs and IIMs are for engineering and management. So the national law institutes, when they were made by state governments, I'll also break a myth, the national universities are state universities, they are not a national law university, they just have a name with it. So when each state has it, Maharashtra is the only state to have 3 national universities, followed by Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, which have 2 national universities. Now, these national universities are dedicated. Whatever in these institutions would happen would be for the legal education only. So you see a moot court, you see resources, you see library books, all and all for law and legal education per se only. While in state universities or private universities, you have multiple courses being run on to. So I not would say that the fees is the only criteria. Fees केवल ज़्यादा इसलिए है कि it's about profit or money earning. No, private universities, major private universities, and this is how the law of the land reads, कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही सेटअप कर सकते हैं. और जब आप फीस लेते हैं, इट्स अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चार्ज इसलिए ज़्यादा करते हैं, फैकल्टी की सैलरीज देना, गुड क्वालिटी फैकल्टीज वुड बी पेड गुड decently, libraries, e-softwares, library has to be strong, moot court facilities, legal aid camps, conferences, what all not. So it's not about that a state universities, we have some wonderful examples of state universities who is doing wonderfully well. We have examples for private universities which are at par to the national universities. And again, I would borrow the answer from my previous question. It is not how an institution has established its name. Aaj institution like NLS Bangalore has its name because Delhi University has its name because the product that it has produced. Alumni, yeah. So what all have been the products? Delhi University, I cited example today. The major thing of these Supreme Court justices are from Delhi University, including the Chief Justice of India. Correct. This exactly speaks of how the things are. Right. So you'll find none of them to be called कि कोई national university गया था या कोई private universities गया था, because उस समय वो चीज़ exist नहीं करती थी. But as how जिससे demand बढ़ती जा रही है, चीज़ें आती जा रही हैं, and I would really compliment some private universities that they're doing a wonderful job in the legal education. And the purpose of each one of us, like आज जब हम लोग इस पोजीशन पे आते हैं कि हमें एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना होता है, हमारे सामने टारगेट यही है that at least 5 years vision, 10 years vision should be that it should be an institute of importance जो legal education को promote करने के लिए, so that when the products are out, the products, and I am of a firm believer, actions speak louder than words. So it's not about me saying or promising something. Let the action of my products which is there should speak for it all. So true. Yeah. Thank you so much, sir. Any final feedback? आपको कैसा लगा experience, or any final tips to the budding lawyers which you would like to give? Budding lawyers, okay. So I would only say just make your base strong. Have that content inside you and believe in yourself. There are institutions. We have Parth's example as well. So today, and as I am saying that thing, it's not merely that you have entered a law school और lawyer ही बनोगे. Correct. आज आप एक डोमेन मुझे बता दीजिए जहाँ लॉ की ज़रूरत नहीं है. This small podcast by him is again one of the beautiful examples. And कभी मैं तो बोलूँगा, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा पाथ को अपना खुद का एक पॉडकास्ट करना चाहिए. And why I'm saying this, because journey of a student from Jaipur to Delhi and wherever he's going, I'm not disclosing where he's going for his masters, but that journey in itself. And I would rather ask you, Parth, कि आप बताओ, and when I say this, it's no one formula suiting for all.
When I say no one formula, जो चीज़ पाथ के लिए वर्क करी वो हो सकता है देवांशु के लिए वर्क ना करी, जो देवांशु के लिए वर्क करी वो पाथ के लिए. But what we can have is learnings. How well he. I was entering a path was like, sir, I really want to know this from you. I said, a path I can give you, but वो चीज़ हम adopt कर लें, because situations of each one of us is different. So believe in yourself. Be very clear with your base learning, whichever subject it is. I was told by my teachers two things. Number one, even if you want to become a good cook, or if you have a small in Delhi sitting, so if you want to have a chole bhature ki dukaan elsewhere, make sure in the entire locality nobody sells the better chole bhature than you. That's excellence. So have that hunger for excellence, I would use a word. And second thing was told to me, what is a research? And this I have said at all the places where I can be. Research is not researching something. Research is about finding the unknown from the known. And this exactly lets you live, let you learn, and keep learning. Good readings would make you good writer. And that would the point which I would like amazing, to end. amazing. On that beautiful note, let's end this podcast. चलो दर्शन कट. Amazing sir, amazing. One take में हो गया. I'm so. Thank you so much. Thank you sir. The pleasure is ours.